Good afternoon, everybody. Today I am again back with another interesting case, I always say. But this is an interesting case. Why? One thing is that these cases are commonly seen, not very commonly, but they are sometimes there in the wards. And if they are in the wards, it is always kept in the examination. This is a case of an acute flaccid paralysis. And I'll just briefly tell you the history. 9-year-old child, she got admitted here on the 4th of May with the complaints of weakness of both the lower limbs for the last about 4 days. This child, as per the history, had initially on the 30th of April precisely, had pain while she was playing with her friends, that she started having pain in the right leg. So much so that she had to stop playing and she went back home. Within few hours, she noticed that she is not able to move the right lower limb. So it was little fast. Following this, within few hours only, there was no movement of the left lower limb as well. Now, there was no involvement of the bladder bowel. That's very important. Next morning, when the history I am telling, the sequence of events, next morning when she got up, it was very difficult for her to get up from the bed. That means indirectly, it proves that there was weakness of the truncal muscles as well. So initially, it was one limb, that was right. Within few hours, it was about the left lower limb, and in the morning after few hours, this child had the weakness in getting up from the bed. After that, again, I think few hours passed, and as per the mother doesn't give that clearly the history of how many hours, but on the same day, the child started having lack of movements of the both upper limbs as well. So that means within 24 hours, this child started having the pain. Following the pain, this child having weakness of the lower limbs, followed by the truncal weakness and the upper limbs. Now, if you recall, this is a case of an acute flaccid paralysis. Now, if I ask somebody, as per the WHO definition, it is anything which is less than 14 days, weakness, lack of movement of any of the limbs, and up less than 15 years of age. As per the, polio surveillance is still on, though we have eradicated poliomyelitis, but we still report those cases. So as per that definition, it comes under the acute flaccid paralysis. Now, acute flaccid paralysis developing, causing all the 4 limbs involvement, ascending fashion. So what possibility it always comes in one's mind is the Guillain-Barré syndrome. But then, importantly in the history, what important histories, which I said, I will then now tell you the negative histories, which are very important. So negative histories were, there was no history of any breathing difficulty. There was no history of any altered sensorium. You will see the child. Very importantly, if you have a paraplegia and if you have got the involvement, this sensorium is very important. So this child had no alteration in sensorium. There was no seizures. There was no breathing difficulty. Along with it, what other histories which you would like to say? Anybody would like to say? Suchit, you would like to say anything more? There was no history of any voice changes. That is very important, because if there is involvement, there was no history of any nasal regurgitation of feeds. Involvement, because you see, these all histories, as I always say in a CNS case for the postgraduates, you try to take the histories of the cranial nerve involvement. So this is what I am trying to take, whether there was any cranial nerve involvement or not. Along with the cranial nerve involvement, you need to see that whether there is so much involvement of the spinal muscles that there is respiratory difficulty or not. So this was all there. Then there was no history of any bladder or bowel involvement. That was very important. Because if you recall,
I had in my one video had shown you the similar kind of a child, which was initially made by our senior resident as a Guillain-Barré syndrome only. But that child initially started with the non-movement of the both lower limbs, but along with it, there was involvement of the bladder and bowel. Bladder and bowel usually is not involved in patients with the Guillain-Barré syndrome, or they are involved in the late in the course. So the respiratory muscles, especially the diaphragms, and the urinary complaints are usually not seen in the Guillain-Barré syndrome. So that is what now there in this child there has never been any history of fever, diarrhea about 2 weeks ago. Why that history is being taken, Tushar? Diarrhea about 2 to 3 weeks ago, especially in this child who has come with the history of non-movement of the limbs. Sir, one of the cause of GBS is Campylobacter jejuni. So, Campylobacter jejuni, yes, you are right, because you would have heard in the newspapers also, Guillain-Barré syndrome came in a big way in the state of Maharashtra. And then the serology was carried out, and ultimately the cause was found out to be Campylobacter jejuni. Yes, that sir. is right. But why I am taking that history about few weeks ago? That is the etiology you are telling me. Fine, Yes. that's good. And there also they found out to be, what I am trying to say, most of the time it is a demyelinating form. So if it is a demyelinating form, then the history of fever, loose motions will occur about few weeks ago. Yes. So that is why you always take this. This history was not there. It all started in just 4 days' time. In few of the patients of Guillain-Barré syndrome, you have axonal involvement, which we will talk later. But then there can be such kind of history also that there is acute involvement of and there is rapid onset. Other thing in the history, anything would like to say? There is no history. You see, you must keep in mind whenever you get a case in the exam of an acute flaccid paralysis, either involving the upper limbs or the lower limbs, you have 2-3 important differential diagnoses. One is you have a patient of acute transverse myelitis. Second is your Guillain-Barré syndrome. Third is your, which of course nowadays we don't see, is the acute poliomyelitis. It could be bulbospinal, spinal, but then nowadays it is not there. And the fourth most important causes, which we still see, especially in the peripheral areas or in the districts, and that is the acute traumatic neuritis. A wrong injection given to the site and the child is not able to move the limbs. So these 4 causes you must keep in mind. Now, other important things, though there was no history of any spinal trauma, which was very important. There was no history of any chronic drug intake. Now, if I ask anybody, Pankaj can answer, any drug which can involve the nerves, if there is a prolonged use of the drugs, anything you can keep in mind? Micocin is neuropathic. IV Micocin does not cause. It is basically the botulism. vincristine. Vincristine causes peripheral neuropathy. Other important thing which is a negative history you must keep in mind is the history of any sore throat, history of any bull neck. So why I am trying to rule out Diphtheria. So in post-diphtheritic, there is a neuritis. So there will be non-movement or flaccidity of the lower limbs. But now the important things I was asking, other thing in the history, or we can finish it off here only. You see, in any patient with acute flaccid paralysis, one is the importance is the sequence of events. When was the last nadir was seen? And when the child started improving, whether the child has improved, as I always say in the CNS case, whether the child has improved or it is static. Here it has been in gradual fashion from the ascending fashion. But I was just talking to one of my colleagues, and in post-diphtheritic, if there may not be any history, because 2 to 3 weeks ago, there may be history of sore throat, there may be history of any bull neck, problems may be there. But after that, usually it involves mainly the cranial nerves. So it involves mainly the cranial nerves, so it will start from the above downwards. So there could be involvement of 7th nerve, there could be involvement of 9th and 10th nerve. So we all will see those things in the examination. So by history also, because history, I always say, a good history can tell you the diagnosis in about 80% of the time, you can give a good diagnosis. So most likely, so there was one more important thing is, there was no history of any spinal trauma. So it could be a cut
in that video which I showed, what happens is sometimes you may have flaccidity even in a patient of transverse myelitis. Why? Because the child, the spinal cord goes into a state of shock. So in that case of state of shock, you may have the area, the flaccidity, but only thing is that there will be difference in the planters. That I'll talk to you when I do the examination. Anything I have left behind? Yeah. One more important thing is that there is no history of any recent vaccination. Post-vaccinal, also there could be demyelination. Last vaccine, the child took it at about 5 years of age. Now the child is about 9 years. So that is all in my history. More other important history in this even in Guillain-Barré is the history of any blurring of vision, history of any facial asymmetry. I am trying to rule out, as I say always, in the examination or in the history, you try to take out the histories of the cranial nerve involvement. So I said nasal regurgitation, voice change. What did I say? Facial asymmetry. What else? Sorry? Blurring of vision. Or there could be any, importantly, there is any painful movements of the eyes. So these things are very important. As I always say, that was a history, then you go into the negative history. After that, in any case of a CNS, you try to talk about the treatment history. This child came to us on the 4th of May. This child was given some injectables for 2 days, and the nature of drugs, I'll talk it later. And after that, there has been some, I think the course has been now stationary. It has not deteriorated. The child has not deteriorated, but child has not much improved also. I think not much improved, but there could be a static course now. Last injection was given on about 7th, and it has been 9 days now that we had given these injections. So that is all in the history. Now we talk about the general physical examination. The child has got no autonomic instability. So you must, it is very important when you are doing the general physical examination, you have to look for the vitals. So vitals of the child, if I recall, the child at that time was afebrile, there was no pallor. If I just ask a child of acute flaccid paralysis, I am just reminded of an old, not very common, any poisoning or any chronic poisoning where the child will be pale and child might have some neuropathy. Anybody can answer me? Lead poisoning. Very good. Very good. So it is lead poisoning. I had seen one case long ago, but that child never had the CNS involvement. The child was very pale. So pallor is very important. If the child is very pale, child has got those flaccid paralysis, this could be a picture of a lead polyneuropathy. So you must keep in mind, because lead also causes motor neuropathy. So all those things I did, features of autonomic instability were not there. There is no other important thing is, we can all get up and see. Other important, any local cause you can find it out very commonly is you need to see if the lower limbs are involved, any local tenderness, because there could be a case of a simple viral myositis, and because of myositis, now I'll have few more questions in the end. I'll keep, because in the next video I'll ask, I started changing my strategy. I thought that I'll put 2 or 3 questions at the end, but okay, let me just ask the house, if there is a history of recurrent paralysis and that paralysis starts after taking a very high carbohydrate meal, can anybody suggest that what could be the cause? Hypokalemic periodic paralysis. What happens in that? After that, there will be increase in the glucose level. Because of sudden increase in the glucose level, there will be sudden release of insulin, causing hypokalemia and paralysis of. I think he's right. This is a very common question. He is asked in the NEET exam also, that if you have a paralysis occurring just after a good carbohydrate meal, ठीक है? तो मैंने आपको बताया, there is no local tenderness नहीं है, myositis ruled out हो गई. अब आपके पास में ये बच्चा आया है with acute flaccid paralysis. Would you like to say, अब आपने शुरू किया है, इसको क्या शुरू करोगे? आपने जीपी कर लिया, जीपी में आपने मोटर इंस्टेबिलिटी देख लिया, इसमें नहीं है, हाइपरटेंशन वगैरह नहीं है, ठीक है? अब मैं आपके पास में क्रेनियल नर्व्स पे आता हूँ. हायर फंक्शंस आर नॉर्मल. क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? अम्मा का नाम बताओ.
अम्मी का नाम नहीं पता तेरे को? नहीं बोलती? अम्मी का नाम नहीं बोलती हैं? ठीक बोल रही है हैं? सही सही बोल रही है। अच्छा ठीक है, ये बिल्कुल बच्चा कॉन्शियस है, सो दैट मीन्स द चाइल्ड हैज गॉट नो हायर फंक्शंस आर नॉर्मल। कोई और चीज हो सकती है हायर फंक्शन जिसमें अब नॉर्मल होते हैं और उसमें पैरालिसिस होता हो। स्ट्रोक है वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक इज वन। और कुछ कॉमनली फीवर, इसमें फीवर नहीं है। और कुछ सोचो, बच्चों में देखते हो कई बार केस ऑफ एन ADEM, so you have encephalomyelitis, acute disseminated encephalomyelitis, so इसमें वैसा नहीं है, कॉन्शियस है बच्चा। नाउ आई कम टू दी cranial nerves involvement। आप दांत दिखाइए, ऐसे करा। अच्छा आंख बंद करो, कस के बंद करो, कस के, शाबाश। इधर आंख देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर। सो इसका मतलब इधर देखिए, ऐसे करो, इससे देखो। तो देयर इज नो थर्ड फोर्थ सिक्स इज ओके। 9th 10th इसका हिस्ट्री में कोई ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि मैंने गैग नहीं किया है, बट देयर इज नो 7th नर्व, 3rd 4th 6th नॉर्मल। सो क्रेनियल नर्व इसकी बच्चे की नॉर्मल है, ठीक है, बच्चा सेंसोरी में इसका ठीक है। नाउ आई कम टू द मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम में सबसे पहले क्या करेंगे, अब इस बच्चे का हमने देखना है, यू स्टार्ट विद द टोन ऑफ द चाइल्ड। टोन कैसी है बच्चे की? अभी भी बच्चे को आई वुड से थोड़ा हाइपोटोनिक ही है बच्चा, is quite hypotonic. What is the way of eliciting hypotonia? One is this thing, other thing is आप इसको थोड़ा ऐसे हिला के भी देख सकते हो, तो whether to find whether the child is normal tone है कि नहीं है। अगर ये काफी ज्यादा मूवमेंट हो रही है तो टोन इसकी अच्छी नहीं है, तो हाइपोटोनिया मिल रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बार बताया था पावर कैसे असेस करते हैं, तो आप मुझे एक को, अब मैं इधर आओ, इधर खड़े जाओ, आप मुझे आप पावर करके बताइए कि इसकी पावर इन द लिम्ब। I always say in the exam, don't talk of the individual muscle, but talk of the muscle in the individual आपके joints में। इसको लगा लीजिए और मुझे पावर करके बताइए। आप नीचे लीजिए, एंकल जॉइंट से लीजिए, आप सब लोग देखोगे, विश्वानी तो तुम्हारा नंबर आने वाला है इसके बाद। आप मुझे बताइए एंकल जॉइंट पे इसकी पावर कैसी है सर? सारे नहीं आप करो, बस हम बताओ नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बेटा इसे अपनी तरफ खींचो, ऐसे करके खींचो अपनी तरफ, खींचो अपनी तरफ, ऐसे खींचना होगा। हाँ करो सर पहले कर रहा है, नहीं कर रहा, एक मिनट को यार, दोनों पे, हाँ। उसको बेटे ऊपर करो। क्या कर रहा है बच्चे की? फैनिंग हो रही है, फैनिंग हो रही है, ऊपर हो रहा है ये सर नहीं है, हाँ, ये एंटी ग्रेविटी नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, तो क्या करोगे? ग्रेविटी एलिमिनेट करके कैसे करोगे? करो करो जैसे बेटा, you see the child is not able to lift up against the gravity, so you have to eliminate the gravity. So for eliminating the gravity, important thing is you have to put the patient in the lateral position. आप करिए बेटा, इस तरफ करवट लो, चलो कर लिया, ऐसे करवट लो, अब कर लो, अब करो करो, अब करो इसे अपनी तरफ करो, इसको बेटा बंद कर देता हूँ। बेटा करो इसे, जैसे ऐसे पैर मोड़ते हैं ना, ऐसे पैर मोड़ना होगा आपको, ऐसे मोड़ो। अभी भी पूरा मूवमेंट नहीं आ रहा। इस वाले पैर का भी करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अभी 255 भी नहीं मिली आपको, सिर्फ फैनिंग हो रही है आपको। अच्छा इसकी देखो बेटे, इसको ऊपर कर, नीचे कर, यहां से आगे से तो कर रही है पंजे से, लेकिन ऊपर इसको डॉर्सल फ्लेक्स नहीं कर रही। इसको ऊपर करो बेटा, इसको ऊपर नहीं। इसका मतलब ये है कि पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे 2/5 से ज्यादा नहीं है एट द मोस्ट। यहाँ पे आपको मिल रही है आगे, लेकिन यहाँ पे आपको 2/5 से ज्यादा नहीं मिल रही। अब आगे आप नी जॉइंट पे, नी जॉइंट पे सुषमा तुम आ जाओ। अब आप मुझे बताइए इसकी पावर ऑफ द मसल्स क्या है? ऊपर उठाने से क्या देखना चाहती हो? सर एंटी ग्रेविटी आपको ऊपर उठाने से तो आप अच्छा, आप ये चेक कर रहे हो। मैंने आपको बोला आप पहले मुझे नी जॉइंट के बताइए, नी जॉइंट में फ्लेक्सर्स कैसे करोगे, एक्सटेंसर कैसे करोगे? प्रोन पोजीशन में करा, प्रोन पोजीशन से पहले इसमें क्या कर सकते हो आप? सर फ्लेक्शन देख सकते हो? यस सर। क्या देख सकते हो सर? विद ग्रेविटी दिखाओ, करो कैसे करोगे? इसको मोड़ो, ऐसे अपनी तरफ मोड़ो, मोड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा मोड़ रहा है, तो ये क्या हुआ? ये फ्लेक्शन हो रहा है, बट ग्रेविटी इज नॉट एक्सक्लूडेड। ओके, ग्रेविटी इज नॉट एक्सक्लूडेड। उसको करके दिखाइए, ऊपर करिए, थोड़ा थोड़ा किया है, मुश्किल से करती है लेकिन कर लिया, तो दैट मीन्स यू ग्रेविटी इज स्टिल नॉट एक्सक्लूडेड, ग्रेविटी इज नॉट ग्रेविटी एक्सक्लूडेड, सॉरी। इसका मतलब ये 2/5 3/5 के लिए मैंने आपको बताया कि इसको प्रोन करना है। ये बहुत लोग गलती करते हैं एग्जाम में कि आप बच्चे को ना सब सुपाइन में ही करना चाहते हो,
वो मैं आपको करके बताऊंगा बाद में कि जब हम सुपाइन में करेंगे, अभी बच्चा तंग होगा। और यू कैन ऑलवेज डू अदरवाइज ऑल्सो, कि आपने इसको इस तरह से बोलो कि ऐसे कर लो। तो आपने जब ये फ्लेक्सर कर रहे हो तो तब भी आपकी ग्रेविटी एक्सक्लूड हो गई, दिस वे। सिमिलरली यू कैन डू लाइक दिस, बेटा इसको मोड़ो, अंदर करो, शी कैन डू इट। तो दैट्स मीन 2/5, तो ग्रेविटी इज एक्सक्लूडेड। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे। तो आपने ये देख रहे हो पावर इन द मसल्स इज अबाउट 2/5 to 3/5, इट्स रेंजिंग बिटवीन दैट। इसको जो है हमने यहाँ पे बेंड नहीं करना है, इसको उठाने के लिए बोलना है तो फ्लेक्सर ऑफ दी ये हिप जॉइंट हो जाएगा। कर सकती है बेटा, ऊपर कर सकती है, इसको सीधा रख, ऊपर कर, करो करो, ऊपर करो, ऊपर थोड़ा सा करती है ये। इसका मतलब ये है कि इसमें 3/5 आई थोड़ी सी इसकी, दैट मीन्स दी इसमें 3/5। अगर मैं 2/5 होगी तो क्या करना होगा आपको, इसको भी हमेशा मैंने आपको बताया, इसको टिल्ट करना होगा बच्चे को, और आपको ये सीधा रखते हुए इसको ऐसे या ऐसे करना होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन, राइट। तो इट इज रेंजिंग बिटवीन 2/5 to 3/5। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मैंने जो पूछा प्रोन पोजीशन में कब करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार बेटा तेरे को उल्टा करेंगे, शाबाश, ऐसे हो जाए, शाबाश, गुड गर्ल, गुड गर्ल। अब मेरे को आपको मैं बता रहा था फ्लेक्सर एट द नी जॉइंट। अब हमको जो करना है, अगर ये फ्लेक्शन अब कर लेती है बच्ची तो इसका मतलब ग्रेविटी इसकी एक्शन कर रही है। अब इसको मोड़ो बेटा, इसको मोड़ो, इसको मोड़ो, ये नहीं कर पाता, थोड़ा सा किया, हल्का सा फ्लेक्शन नहीं होता इसका। दैट मीन्स शी कुड डू विद द ग्रेविटी एक्सक्लूडेड बट शी कैन नॉट डू विद द ग्रेविटी। तो इसका मतलब यही वही वाली बात हो गई, फ्लेक्सर्स ऑफ द नी are about 2/5 to 3/5. That is what the muscle charting you have to do. Whenever you get a case, maybe a muscular dystrophy, you have Guillain-Barré syndrome or any flaccid paralysis, power of the muscles आपसे हमेशा करवाई जाएगी एग्जाम में। तो पावर ऑफ द मसल्स आप इंडिविजुअल मत करिए, लेकिन आपको पावर ग्रुप ऑफ मसल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक तो उल्टा करके आपको फ्लेक्सर्स का पता हो गया। एक्सटेंसर्स के लिए मैंने उस दिन भी, एक्सटेंसर्स कौन से होते हैं भाई उसके, नी जॉइंट के एक्सटेंसर बताओ, क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स जो एक्सटेंसर्स होते हैं बेटा, आप सीधे हो जाओ। क्वाड्रिसेप्स के 4 नाम गिना, कोई गिना सकता है? 4 मसल्स होते हैं ना, हाँ जी, हाँ, अच्छा, और चौथा सेमी मेम्ब्रेनस हो गया, फ्लेक्सस ऑफ द नी जॉइंट होता है, उसको वहां से आगे वास्टस, वास्टस ये बता रहा है उसका होता है, वो तो फ्लेक्सर्स हैं, उल्टा ही बोले जाएगा तू उसको। इसमें जो है आपको क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस में दे आर द एक्सटेंसर्स ऑफ द नी। एक्सटेंसर्स ऑफ द नी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इसको ऐसे बिल्ड कर सकते हो, इसको सीधा करो। नाउ अगर मैं इसको सीधा करवा रहा हूं तो क्या हो रहा है, ग्रेविटी एक्सक्लूड है या ग्रेविटी एक्ट कर रही है? इसमें ग्रेविटी एक्ट कर रही है। इसको सीधा किया, इसमें उल्टा हो गया ना। फ्लेक्सर्स के लिए काम नहीं आएगा, बट सुपाइन पोजीशन में यू कैन टेस्ट फॉर द एक्सटेंसर्स। सीधा करो बच्चे, थोड़ा थोड़ा ही करती है, ठीक है ना। एक्सटेंसर्स आर नॉट दैट मच इन्वॉल्व, बट आपने ये देखा होगा लोअर लिम्ब में ऑलमोस्ट जो है बच्चे को सिमेट्रिकल पैरालिसिस है, सिमेट्रिकल एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस है, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में क्या करोगे? अपर लिम्ब में आप, तू बैठ सकती है बेटा, बैठ सकती है? नहीं, देखो इस बच्चे को मैंने बोला था हिस्ट्री में भी था, बच्चा स्टिल नॉट एबल टू सिट, दैट मीन्स द ट्रंकल मसल्स आर स्टिल इन्वॉल्व। इधर खड़ा करें तो बैठेगी, इसकी सपोर्ट लेके बैठ जाती है, वैसे नहीं बैठती। अच्छा, अब मैं चेक करूंगा इसके पावर इन दी अपर लिम्स। अब आप मेरे को बताओ, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, फ्लेक्सर ऐसे करो बेटा, हाँ ऐसे करो, ऊपर करो, शाबाश। ये देखो, दिस इज द ये मसल्स जो शोल्डर पे कर रही है, ये ग्रेविटी एक्शन कर रहा है, तो ये इसको ऐसे किया इसने, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास में, फर्स्ट इज सुपीनेटस होता है, उसके बाद में डेल्टॉइड होता है, उसके बाद में लेटिसमस आ जाता है। तो ये लेटिसमस ही होता है ना, सुप्रास्पाइनेटस होता है, सुप्रास्पाइनेटस होता है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको मिली। फ्लेक्शन मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एडक्शन। तो मसल्स आपके यहाँ शोल्डर पे, इसका मसल ऑलमोस्ट क्या है 3/5 से आ ही रहा है। और ऊपर करके दिखा सकती है बेटा इसको, ऊपर कर, एक मिनट, अब ऊपर कर,
ये कर सकती है, इट इज ऑलमोस्ट 4/5, 3/5 to 4/5, ठीक है। अब मैं आ गया आपके फ्लेक्सर रहती एल्बो, एल्बो को मोड़ो ऐसे, शाबाश, सीधा करो, शाबाश। तो ये आपने इसको जो फ्लेक्सर कर रहा है, ये ग्रेविटी इसकी एक्सक्लूड होगी, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, बताओ, ग्रेविटी इसकी एक्ट कर रही है। ये फ्लेक्सर में 3/5 इसका आ रहा है, एक्सटेंसर में क्या होगा, ट्राइसेप्स एक्ट करेगा। तो ट्राइसेप्स में क्या करोगे, सीधा करो, ये ग्रेविटी एक्सक्लूड हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ग्रेविटी जो है लैटरल करोगे, दिस इज ग्रेविटी इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। इसमें उल्टा करके इसको ऐसे करोगे तो तब इसको ग्रेविटी एक्शन करेगा। तो ये आपके समझ आ गया कि ये आपके 3/5 अपर लिम्ब आर लेस इन्वॉल्व, बट दे आर स्टिल इन्वॉल्व। नाउ इन सच ए पेशेंट आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैंने आपसे पूछा था रेस्पिरेटरी वेरी इंपॉर्टेंट जो करना होता है कि वेरी इंपॉर्टेंटली वेदर द रेस्पिरेटरी मसल्स आर इन्वॉल्व और नॉट इन्वॉल्व। respiratory muscles are involved in the end. Now I want to ask you, anybody, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है कि रेस्पिरेटरी मसल्स दो हो गए आपके पास में, एक तो इंटरकॉस्टल मसल्स हो गए और एक आपके पास में डायफ्राम हो गया। नाउ आई हैव टू सी दी, बेटा इसको ऊपर कर लेते हैं। नाउ इफ आई हैव टू सी वेदर द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम इज देयर और नॉट देयर, क्या करोगे, पहले तो सबसे पहले देखोगे पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होता है, जब बच्चा सांस लो बेटा, जब ये बच्चा सांस लेगा तो देयर विल बी ए डीप इनसाइड। देखो ये हाथ लिया, फोकस करिएगा, इसको ना ऐसे करके इसको हमने यहां पे डायफ्राम के यहां रखा, ये दोनों एंगल से इस तरह से हाथ रखा। अगर मैंने इसको स्प्लिंट कर दिया है, इसको ऐसे किया मैंने, तो डायफ्राम को मैंने स्प्लिंट कर दिया, इसका मतलब देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, दिस इज वन वे। नाउ इफ देयर इज इंक्रीज, अगर मैंने डायफ्राम को स्प्लिंट कर दिया है, इफ देयर इज इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी रेट और बच्चे को डिस्ट्रेस होने लगता है, इसका मतलब यह है कि उसका रेस्पिरेटरी मसल्स उसके इन्वॉल्व है और मैंने डायफ्राम भी स्प्लिंट कर दिया। दैट मीन्स द डायफ्राम व्हिच वाज वर्किंग एज द मेन सेवियर, वो भी मैंने स्प्लिट कर दिया। अदर वे ऑफ स्प्लिंटिंग द डायफ्राम इज यू कैन पुट अ हैंड लाइक दिस, सी दिस, इससे एक ही हाथ से दोनों बंद कर दिया। तो दिस इज अ डायफ्राम का स्प्लिट करना। ये कैसे करना है, या इसको दोनों से, इस दोनों प्यूला ऑफ द डायफ्राम को ऐसे करना है। सिमिलरली फॉर द इंटरकॉस्टल मसल्स, आप अपना हाथ जो है यहां पे रखेंगे और आप इसको स्प्लिंट कर देंगे, ये देखो, दिस इज द वे यू डू इट। तो उसके बाद में हमें क्या देखना है, बच्चे को सांस में प्रॉब्लम होती हो, बच्चे को डिस्निया बढ़ जाता हो, तो आपको एक रेस्पिरेटरी रेट देखना होगा and you have to splint. This is the way you splint the intercostal muscles and this is how you splint the diaphragm muscles. ये आपको ये सारे साइंस आने चाहिए एग्जाम के लिए, समझ गए। So this is how you do it. Here there is no involvement of the respiratory muscles. दूसरा एक वो फिंगर काउंट, 1 minute काउंटिंग भी होता था वो, सिंगल ब्रेथ काउंट, ठीक है ना, ठीक है। ओके, सो वन थिंग आई सेड कि पावर देख लिया आपने, हाइपोटोनिया मिला। नाउ वी कम ऑन टू दी रिफ्लेक्सेस। अब आपने रिफ्लेक्सेस लोअर लिम्ब में देखना है, आओ जी फोकस कीजिए। रिफ्लेक्सेस आर नॉट एलिसिटेबल, देखो कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो रिफ्लेक्सेस नी बाइलैटरल नी नहीं आ रहे, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको, there are no ankle reflexes, नहीं आ रहा। then I come on to the planters, फोकस कीजिए इस पे। प्लांटर्स जो है म्यूट है, see there is no movement, थोड़ी सी मूवमेंट होती है बट इट इज ऑल म्यूट, ऊपर नहीं आता, फैनिंग और ऊपर जाना ये नहीं होता, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो उल्टा नीचे जा रहा है, देखा आपने, फोकस किया, ये देखो ये नीचे गया। तो प्लांटर इज फ्लेक्सर। मैंने आपको पहले भी बताया, एक मेरा वीडियो था विच वाज वेरी पॉपुलर, दैट दिस चाइल्ड प्रेजेंटेड लाइक दिस ओनली थिंग वाज दिस चाइल्ड वाज इन स्पाइनल शॉक एंड वी ओनली फाउंड आउट दिस कुड बी अ केस ऑफ माइलाइटिस बिकॉज देयर प्लांटर्स आर अपगोइंग। So during the initial stages, you can have a picture of a acute flaccid paralysis, but planters is very important. So planters, here it was mute, here it was coming down. Okay, satisfied? आप करके देखिए, करके खुद देखो ना, इसको करो, देखो भैया फोकस करो, इतनी जल्दी जल्दी मत करें यार, आराम से, ये देखो
पूरे बॉल तक लेके जाते हैं। तो ये नीचे थोड़ा आता है, नहीं हुआ, ठीक है। तो दैट इज ऑल व्हाट यू वांट टू से। उसके बाद में हमें देखना है इसी बच्चों में सीएनएस में और क्या देख रह गया, एनीबॉडी? वी हैव टू लुक फॉर द मेनिंजियल एंड सेरिबेलर साइन। नाउ इन a child with acute flaccid paralysis, are the cerebellar signs important? Anybody can say? I have very esteemed faculty also sitting. There is something, the variant of Guillain-Barré syndrome is there, which is called Fisher, Miller-Fisher variant is there. In that variant, you have ophthalmoplegia, you have ataxia. So in that case, you need to see. अभी ये बच्चा जो है, now question is, ये बच्चे की पावर जो है ऑलरेडी कम है. So here I can't make him walk, and if the child sways, I cannot say this child is ataxic because the power of the muscles itself is about 2 to 3/5. But yes, other cerebellar signs I can always say, I can always elicit. आप इसके यहाँ देखो, इधर करो. There is no movement. There are no nystagmus. इधर करो बेटा. There is no focus करो भाई आइस पे. ये देखो कुछ भी ये हिलता नहीं है, तो there is no movement. इसको पकड़ो बेटा, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ लगाओ, करो फटाफट. Even this is also not correct because the power of the muscles here is weak. So I cannot say the child, we can't elicit that sign also. So in the exam also you have to be very careful. अगर उसकी पावर कम है तो आप सेरिबेलर साइन सारे एलिसिट नहीं कर पाओगे. ठीक है? ओके. So this is all I wanted to show you. Now we just briefly discuss. So I will just review the history. This is a child, 9-year-old child who came to us. 4 days history of acute flaccid paralysis in the ascending fashion. Started with the lower limb and went on to involve the upper limbs as well as the truncal without any loss of the consciousness. So if you have this kind of a child, what could be the possibility? As I said, one is the acute transverse myelitis, which could be most likely there will be history of fever, which is not there. There could be history of any spinal trauma, which is not there. There is something called as hematomelia. There is a cut of the cord, that is also not there. So the child is basically. Now my question was, one is that I have already discussed. Anything else which I have left behind? One thing after sitting, I am trying to see in the general physical examination. Now my question is, इस बच्चे को इंपॉर्टेंट चीज जो दूसरी होती है वो होती है एस्कार. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टिक पैरालिसिस. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई कुड नॉट आस्क इन द हिस्ट्री, व्हिच यू पीपल शुड नो, दैट हिस्ट्री ऑफ एनी टेकन एनी कंटामिनेटेड फूड्स बिकॉज बॉटुलिज्म. तो बॉटुलिज्म के लिए अगर हनी इज नॉट गुड, अनकुक्ड फूड यू हैव टेकन, contaminated food you have taken, that will cause the botulism. So one thing that is important in the history. Other important thing I could not see in the examination. You must see, look for an scar. Look for the child has gone recently to any forest area, and you always look for the scar, especially below the pinna. You look for any scar that is called tick paralysis. In tick paralysis also, you can have flaccid paralysis along with the history of maybe a scar you may see. So these are the important things which I just forgot, but then this also should be part of your examination. Now to cut the story short, this child, as I said, had received 2 doses of some injection. What injection we would have given is the immunoglobulin. So we had given to this child 2 gram per kg of immunoglobulin for 2 days. 1 gram per kg each day we had given. You can also give 400 milligrams for 5 days. So basically the dose is 2 gram per kg, which needs to be given to these children. So IVIG had been given to this child. Now I come on to the investigation. The more important thing is clinically you have made this case as case of a history and examination looks like a case of a Guillain-Barré syndrome. Short history, involvement is there, which I have explained to you. First thing you will get it done is the nerve conduction studies. So nerve conduction studies we got it done for this child. I'll just give you briefly the salient points of the nerve conduction. The findings showed reduced compound muscle action potential, CNCV, normal onset latency, F wave is normal latency in all sample surveys,
H reflex was normal latency bilaterally. Conclusion में उन्होंने दिया है a normal electrophysiological study suggestive of axonal lower limb motor neuropathy. So that means it is an axonal motor neuropathy. Now in Guillain-Barré syndrome, you have three entities, what is called AMAN, where you have motor neuropathy, which this child has got. So this child has got axonal lower limb motor neuropathy. So it is, what is it? It is AMAN. The other thing is, if you have the sensory involvement, I asked in the history, if I say there was no history of any paresthesia, there was no history of any tingling sensation. So most of the time in patients with your Guillain-Barré syndrome, you have subjective sensory loss. They may come to you with pain, numbness, they may come to you with hyperesthesias, सुई लगती है, चुभता है. So that is what has happened. If that had been there, एक तो हो गया subjective sensory loss. Then the other variety is called AMSAN. That is, what is it called? Acute motor sensory axonal neuropathy. So one is axonal neuropathy, the other variety is the acute disseminated demyelinating infiltrative polyneuropathy. So you have ADIP, you have AMAN, you have ASMAN. Am I right? AMSAN, sorry. Now this child has got NCV has already proved this child to be having a motor axonal neuropathy. So that is clear. What other tests we can get it done? We got the CSF done for this child. Usually these tests should be done after 2 weeks. We got the CSF done for this child on the 9th day, little early. Even then, there was no pleocytosis. The CSF proteins were 45. It was little increase, but there was, I cannot say this, there was albuminocytologic dissociation. Because albuminocytologic dissociation, you should have a protein which should be more than twice the normal value for that age. Now, maybe because we had done the CSF examination little early, so we could not get it, but ideally you should get. So, nerve conduction studies, you should get it done. The other important thing, as I said, I am reminding of my old video. You must get, at time when you are getting the, supposing you are thinking of acute transverse myelitis, there you will always get some sensory level. You try to find it out sensory level. Here I didn't check the sensories, but sensory level, the sensations are all intact in this child. But yes, as part of the examination, you have to do the sensory level. Sensory level, you will find it out in the acute transverse myelitis. Plus, when you get the MRI done, you will find the picture of myelitis here. Whereas in the contrast MRI, you can find it out whether the nerve roots are prominent or the spinal cord, the contrast is there. Thank you.